Come in. Sit down, Bhavesh. Your interview is on 19th. जी सर. Okay. Which attempt is this, Bhavesh? Sir, second interview. Second interview attempt? Yes. Attempt third, sir. Third attempt. First interview last year only. Yes, sir. What was your marks? 798. Do you still want suggestion from us? Yes, sir. I want to improve more, sir. You're a wonderful candidate and excellent candidate with sterling qualities of head and heart. Thank you. And you engaged us in an animated discussion on everything. So, a highly knowledgeable person, your communication skill is excellent, you weigh pros and cons of alternatives before giving any opinion or before giving any concluding remarks. So, that speaks volumes about your mental alertness, your critical power of assimilation, because the interview is all about that only, your personality test. And your very clear and logical exposition, I so to say. Social traits are also excellent. So there is absolutely no problem, and your interest and knowledge of current affairs absolutely up to the mark. Balance of judgment was there. You are a person of absolute integrity. So these are the qualities which are seen in a civil servant, and you have already proved this quality last year also, and you are going to repeat this performance. So nothing much to tell you as such. Thanks. Last time we were not there in the income tax. Technically speaking, now you are going as a member of income tax, though you are on EOL and all that. But read about the interim budget, all aspects of the interim budget, particularly with respect to your tax collection, because now income tax has become a greater collection basket as compared to the corporate tax. So those details is expected of you, although you don't have any working experience but what the department is doing about transparency and all that. Recently some changes have been suggested in the interim budget about the outstanding tax demands of income tax from persons up to rupees 10,000 per year up to certain year, beyond that 25,000 or so. So what are those changes, and why those changes were necessitated, why announcement was made by the finance minister, the rationale behind this. So just have a look at that, then you will understand what is the magnitude of problem for created by such small amounts aggregating to several hundreds crores of rupees. That is one area where you should take information, gather information as much as possible. Okay, sir. Beyond that, any question is asked, we don't have any doubts about your abilities to handle those questions. Yes, You will be really doing very well. You have worked in government of Haryana also for, you are still there? no, sir. I resigned from that. Must have resigned, sorry, you have joined there. So about the Haryana administrative issues, and you see the perception of the bureaucrats, why perception is like this, how to change that perception. Do you think that bureaucracy which has been working for the welfare of the people during the last 75 years, the same set of bureaucrats should be there for the next 75 years also? What are the qualitative changes? And that may take you to the larger issue of training and all that, and you know about those mission Karmi Yogi and all. Yes. So what are the basic contours of mission Karmi Yogi and all that, and you will get very good marks. 190 have already obtained, so that is almost the maximum one can obtain. You are already in that range. So how have you done, by the way, in your mains compared to the last year? Sir, much better. Much better. So they are a fit candidate to become a member of the Indian Administrative Service, which is your first choice, I believe. Yes, sir. Wish you all the best for our side. If you have still any specific doubt in your mind, feel free to ask us. Sir, just one. If in the introduction, should I mention my age? Because I think that can be a positive I don't factor. think it's required, because all the details are available with the board members. So age it means, because you are quite young, I believe. Sir, I'm 23. 23. So it may tantamount to boasting about one's age. Look, I am 23 and still I am an achiever. Okay, sir. So let board appreciate that fact, that this is a young boy, because all parameters you are satisfying to become a member of the Indian Administrative Service. Unless until you decide not to become, nothing is going to happen. Just be your normal self, natural self, and go with the tide, and you will do well. Absolutely, no doubt. Okay. Thank you very much. All the best. Thank you, sir.
मुझे ध्यान है कि हरियाणा के एक लेबोरेटरी के एक व्यक्ति से मेरी एक बार बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार इस चीज़ को रोकने में सक्षम हो पा रही है पीसीपीएनडीटी के प्रावधानों के अनुसार। जी सर। तो उसने मुझे बहुत रोचक बात बताई। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कदम उठाएंगे। यस। उसने बताया कि लेबोरेटरी में डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो पैसे लेता है मरीजों से ये बताने के लिए कि भ्रूण मेल है या फीमेल है। तो मैंने पूछा कि फिर वो फंसते क्यों नहीं। तो उसने बताया कि सर तरीका ऐसा है कि दुनिया की कोई सरकार फंसा ही नहीं सकती है। यस सर। वो जब रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ इतना बोलते हैं कि रिपोर्ट लेने के लिए मंडे को आ जाना या फ्राइडे को आ जाना। मंडे यानी मेल, फ्राइडे यानी फीमेल। इस लेवल पर जाकर आप कैसे किसी लेबोरेटरी को फंसा पाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आपके ज़िले में इस स्तर पर चीज़ें हो रही हैं और ये मंडे फ्राइडे तो एक तरीका है, इसके और 1000 तरीके हो सकते हैं। कोई सिर्फ इतना ही तय कर ले कि मैं दाएं हाथ से साइन करूं तो समझ जाना बेटा है, बाएं से साइन करूं तो समझ जाना बेटी है। ऐसे 1000 तरीके हो सकते यस हैं। सर। इस लेवल पर जाकर कैसे बदलाव करेंगे आप? सर अगर ऐसी मानसिकता है तो वो बेसिकली सोसाइटी के स्तर पर ही चेंज हो सकती है। जब तक सर महिलाओं के लिए समाज में एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी, उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक लोग सर किसी ना किसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे। तो अगर ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में तो मैं सर यही करूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया जाए। बेसिकली लड़कियों के लिए ऐसी कोई स्कीम्स लाई जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं वो सर लड़कियों को बोझ ना समझे। और सर ये जो एक्शन हो रहे हैं किसी लेबोरेटरी में, तो इसके लिए सर विजिलेंस सेल ही हो सकती है जो मुझे गुप्त इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं उसके लिए एक्शन करूँ। क्या वजह है कि एक तरफ हम अपने भारत के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ दे नहीं पा रहे, दूसरी तरफ मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए कि बाहर के पेशेंट्स हमारे पास आए खूब, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। क्या ये पॉलिसी के लेवल पर कुछ गलत नहीं है? सर अगर हम ये देखें तो हम एक आइसोलेटेड अप्रोच लेके नहीं चल सकते कि पहले हम कम्प्लीटली डोमेस्टिक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे फिर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। ये एक साइमल्टेनियस हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो सर ये होने से मेडिकल टूरिज्म क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा करता है, तो सर उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सर ये 2 वे अप्रोच है, तो दोनों तरीके से डेवलपमेंट फिर होने का चांस है। क्या सर हिपोक्रेटिक ओथ जो है, हिपोक्रेट्स नाम के जो साइंटिस्ट और जो फिजिशियन थे उनके बाद इसको स्टार्ट किया गया। ये ओथ जो है बेसिकली मेडिकल इथिक्स और जो प्रिंसिपल्स हैं इस प्रैक्टिस के ये सर्व करती है। लेकिन सिर्फ ओथ लेना जो है इस पर्पस को सर्व नहीं करता, हमें वर्ड बाय वर्ड उसकी स्पिरिट को भी इनकलकेट करना होगा तभी वो क्या खास बातें हैं उस सोच में, आपको याद है कुछ बातें? यस सर। सर एक तो फिजिशियन की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए अपने पेशेंट के लिए, क्या उनका कैरेक्टर होना चाहिए, किस तरीके से प्योरिटी के साथ और सेल्फलेस तरीके से उनको पेशेंट की सर्विस करनी चाहिए, पेशेंट फिजिशियन का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए और किन सिचुएशन में स्पेसिफिकली उनको कैसे अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर नैतिकता से बहुत दूर हो, घोर अनैतिक व्यक्ति हो, तो वो पेशेंट के साथ कितना बुरा हो सकता है, क्या सलूक कर सकता है? सर अगर कोई गौर अनैतिक है तो मॉनिटरी अपने बेनिफिट्स के लिए पेशेंट की बॉडी को मैक्सिमम पॉसिबल हार्म्स को, क्योंकि कई मैं समझना चाह रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं, एग्जांपल देंगे सर। जैसे किडनी रिमूवल के कई सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं, वो हो सकता है। इसी तरह मल्टीपल ऑर्गन्स जो है उनका रिमूवल किया जा सकता है। सर उसके अलावा अगर पेशेंट को सर्जरी की नीड नहीं है तो भी अननेसेसरी सर्जरी एक जो है फियर परसेप्शन से की जा सकती है। सर उसके अलावा कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर जो पेशेंट को नीडेड नहीं है वो मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए किया जा सकता है। ऐसे डॉक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? क्या हमारे पास दंड के पर्याप्त विधान हैं, और यदि नहीं है तो आपका क्या इस पर रिकमेंडेशन है, और अगर हैं तो क्या हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उन चीज़ों को? सर ये जो प्रोफेशन है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, तो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेशेंट जो है अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके तहत उनको कंपनसेशन भी मिल सकता है। लेकिन फिर भी इस एक्ट के बावजूद भी मुझे लगता है इसका रिग्रेस इम्प्लीमेंटेशन की जो लैकिंग है उसकी वजह से कई सारे ऐसे अनइथिकल केसेस दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नए लॉ की बजाय जो ऑलरेडी हमारे पास लॉज है उनको हमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के साथ में, अगर इस तरीके के कोई केसेस होते हैं तो हमें एक हार्ड मैसेज के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हरियाणा की समस्याओं में से एक समस्या है फीमेल फिटिसाइड की। यस सर। मादा भ्रूण हत्या कहना चाहिए, बालिका भ्रूण हत्या। यस सर। आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर पीसीपीएनडीटी एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट करने में भूमिका निभा सकती हैं। यस सर। ताकि कोई भी अस्पताल, कोई भी लेबोरेटरी भूल से भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी होने वाली माँ को ना दे सके कि उसके पेट में, गर्भ में मादा भ्रूण है। यस सर। या कोई हॉस्पिटल एबॉर्शन सिलेक्टिव तरीके से ना कर सके। बिल्कुल। आईएएस के तौर पर आपकी भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है और आपको ऐसी स्थितियां बनानी है कि ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए। यस सर। तो मुझे बताइए कि अगर हरियाणा में मादा भ्रूण हत्या की समस्या को जड़ से खत्म करना हो और आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ने आपको विशेष रूप से ये एक प्रोजेक्ट दिया है और 5 साल का समय दिया है और फंड की कोई कमी नहीं है, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे कि हरियाणा से ये समस्या खत्म हो जाए?
सर इसके लिए मैं कई लेवल्स पे काम करूँगी। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि जो भी पीसीपीएनडीटी के प्रावधान हैं उसके बारे में सर सबको अवेयरनेस हो, पेरेंट्स को, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, सब जगह, कि क्या उसके लीगल एक्शंस हो सकते हैं इसके खिलाफ। दूसरा सर, जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि वहाँ ऐसा किया गया है तो मैं तुरंत उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूँगी। तीसरा सर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं विजिलेंस सेल बनाऊँ। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प ले सकती हूँ कि तुरंत अगर ऐसा कहीं भी संदेह हो तो मेरे तक तुरंत सूचना पहुंचाई जाए और रेड मारी जाए सडनली, जिससे अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको तुरंत रोक सकें। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, क्या हरियाणवी साहित्य का योगदान हिंदी साहित्य के विकास में देखा जा सकता है? सर बेसिकली हरियाणा में हिंदी का कोई बड़ा कवि तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस टाइम सर हरियाणा बना नहीं था सेपरेट रीजन, उस समय दिल्ली के आसपास अमीर खुसरो जो हैं उनको सर हिंदी का मतलब हरियाणा के क्षेत्र में इंक्लूड किया जा सकता है। तो सर इन्हीं को मैं मानता हूँ। हरियाणा Bhavesh, it's heartening to know that you have taken up the cause of blood donation and you have been actively associated with the blood donation campaign. Now, I'll clarify one certain confusion in my mind. First confusion is that it is generally believed that certain blood group is universal donor, certain other is universal receiver. What is the logic or scientific reason behind it, or is there any scientific reason or not? Sir, there is a scientific reason behind it, though the word universal donor is a bit of a misnomer. Though the O group can donate because it does not have the antigens, either A or B antigen, it can donate to everybody, but it is usually not taken up. It is only an emergency procedure because it has antibodies, both A and B antibody, and if it is say donating to A, it will attack the antigen on the A blood group, that is the B antigen. So it is usually mixed with certain medicines to ensure that the blood does not lead to clotting. So the universal donor and universal receiver, which is the AB, is a bit of a misnomer. The science allows it to donate, but only in certain. Okay. What is the RH factor, significance of RH factor, RH negative and positive? Sir, RH factor is another antigen on the envelope of the red blood cell. So there is no naturally occurring antibody to it. So if a person with RH negative gives the blood to RH positive person, so it will lead to the body creating antibodies against that and attacking the red blood cells, sir. Suppose if in a couple, one person is having RH positive A group, or other person is having AB group RH negative, then what precaution couple should take or should not take any precaution regarding the childbirth? Sir, after the birth of the first child, the mother should be given immunoglobulin to ensure that the hemolytic disease does not happen during her second pregnancy, especially if the mother is RH positive, RH negative, and the child is RH positive. Okay, thank you very much, Bhavesh. Nice interacting with you. The interview is over. You may go now. Thank you.